Hello, a very good morning to everyone. I hope you have understood the first part of lesson number 3. Today in our Maths Magic textbook, we are continuing with lesson number 3. What was the name of lesson? Do you remember, children? It was a trip to Bhopal. So last time we studied about, or I explained you about how many children were going on a picnic. It was from standard 1 to 5 and total of 210 students were going on the picnic. Now we are going to continue with the same lesson which and we'll start from page number 27. So first of all, you are going to write today's date and classwork and in the textbook, and then we'll start our work. Now now we had studied about the bus going along the bridge and the water level on in the river during the summers and during the monsoon. Now what happens while they were crossing the bridge? After crossing the bridge, suddenly we'll start from page number 27 now. Suddenly the bus stops with a jerk. Oh, the petrol pump. 2 buses need to be refilled. Now the bus stops at the petrol pump and 2 buses needs to be refilled. मतलब कि 4 buses में petrol refill करना था. The buses stand in line. Children are sticking their necks out to see how diesel is filled in the bus. Now, when the bus stops at the petrol pump, all the children just peep out of the windows to see how the diesel is being refilled in the bus. Some children have got down to look more closely. बहुत से बच्चे जो है बस में से नीचे उतर गए देखने के लिए कि बस में जो है पेट्रोल या डीजल कैसे रिफिल होता है. You all must have visited petrol pumps with your parents, with your father or the mother when they go to refill the petrol in their scooters or in their cars. So you must have seen how in the petrol pump the petrol is filled. This is the picture of a petrol pump. You can see here the petrol is being filled in this vehicle. Now we'll move. Each bus takes about 15 minutes to refill and there are 2 buses to be refilled. Now what is given here is that 15 minutes are needed to refill 1 bus. एक बस के अंदर अगर पेट्रोल रिफ़िल करना है तो उसके लिए 15 मिनट्स का टाइम लगेगा और ऐसी 2 बसेस हैं. सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट डैश मिनट्स. तो कितने मिनट्स के लिए वो लोग खड़े रहेंगे? एक बस के लिए 15 मिनट्स, तो 2 बसेस के लिए 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 30 मिनट्स. तो दे हैव टू वेट फॉर 30 मिनट्स फॉर द बसेस 2 buses to be refilled by the petrol, which means that they will be late by about dash minutes. तो मतलब जो उनका डेस्टिनेशन जहाँ उनको पहुँचना था वहाँ पहुँचने के लिए उनको 30 मिनट्स लेट होगा. नाउ लेट अस सी वेयर दे आर गोइंग. दिस वाज अ ट्रिप टू भोपाल. सो ये लोग जो हैं वहाँ भोपाल पहुंचने में उनको 30 मिनट्स लेट हो जाएगा. अब जैसे पेट्रोल पंप में यहाँ पर डीजल फिल रहा है. इट हैज़ सच अ बिग टमी. इट हैज़ ऑलरेडी टेकन 100 लीटर्स. मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि देखो कितना बड़ा टमी है. मतलब इसका 100 लीटर्स ऑफ डीजल और पेट्रोल ऑलरेडी ले लिया है. सो वी हैव टू पे 5,500 रुपीज़ फॉर द डीजल. और डीजल भरने के लिए कितने पैसे उन्होंने 2 बसेस के लिए? 5,500 रुपीज़ जो है 2 बसेस के डीजल के लिए दिया. और कितना डीजल उन्होंने भरा? इट इज़ 100 लीटर्स ऑफ डीजल एंड दे पेड 5,500 rupees. Dear children, you will underline these 2 things. Look at the picture and find the price of 1 liter of diesel. अब यहाँ पर हमको पिक्चर में देख के हमको बताना है कि देखिए 5,500 यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर the amount of petrol or diesel that has been filled, that is 100 liters. So what is the cost of 1 liter of diesel? 1 liter of diesel का cost कितना होगा? उसके लिए हम लोग को क्या करना है? टोटल अमाउंट जो दिया उसको हमने 100 लीटर से डिवाइड करना है विद द टोटल क्वांटिटी. टोटल अमाउंट पेड डिवाइडेड बाय द टोटल क्वांटिटी ऑफ द डीजल. तो 5,500 डिवाइडेड बाय 100. तो ये जो है यहाँ पर मैंने आपको डिवीजन दिखाया है 55,500 अपॉन 100. जीरो बोथ द जीरोस आर कैंसल. सो 55 रुपीज़. दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल इज़ 55 रुपीज़. नाउ एज द buses are being refilled, some children go to the toilet near the petrol pump. How much time did Aman take to come out of the toilet? अब यहाँ पर जैसे जैसे refill हो रहा था उस वक्त कुछ बच्चे उतर के they went to the toilet. And now here there is a blue box that is given. Aman has taken as much time to
empty himself as one bus takes to refill. अगर एक बस को रिफिल करने के लिए जितना टाइम लगा उतना टाइम अमन ने टॉयलेट जाने के लिए लगाया. For to go to the washroom he took the same time, and to refill one bus how much time was taken? It was 15 minutes. Here you can see 15 minutes was taken to refill one bus. So the time taken by Aman is the same as the time to refill one bus. So here how much time did Aman take to come out of the toilet? He took 15 minutes. So here you are going to write 15 minutes. Now we move on to page number 28. Now this is to Bhimbetka. Now it was already on the last, and we had studied that they were going to stop at Bhimbetka, which is a very beautiful place. After the buses are refilled, the journey starts again. Now the children are told that they are stopping at Bhimbetka. जब buses refill हो गई, all the children had again boarded the bus after going to the toilet. So they started, and now it was told that they will stop only at Bhimbetka. Anjan, what is Bhimbetka? Miss Raina, it is a place with lots of caves and cave paintings made by the people 10,000 years ago. Now here you are going to underline this 10,000. So it is a very old place, जो है आर्कियोलॉजिकल प्लेस है जहाँ पर पुराने केव्स हैं और केव पेंटिंग्स है. पहले ज़माने में गुफाएं, केव्स मीन्स गुफाएं होती थी, और उन गुफाओं के अंदर जो थी पेंटिंग्स या कार्विंग्स होकर स्कल्पचर्स या मूर्तियाँ बनाई जाती थी. तो भीमबेटका में वैसा ही है कि वहाँ पर पुरानी बहुत सारी केव्स और केव पेंटिंग्स हैं जो कि 10,000 ईयर्स पहले, 10,000 साल पहले बनाई गई थी. सुमित, 10,000 years, I cannot even think of 1,000 years back. तो सुमित को ऐसा लगता है ओ 10,000 years ये तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात हो गई, मैं तो 1,000 years के पहले का भी नहीं सोच सकता. So here you have to underline 1,000 years also. Gopi, oh 1,000 years is a big thing. I can't think even of 100 years. अब यहाँ पे देखिए धीमे धीमे the numbers are getting smaller. First is your 10,000, then is your 1,000, and now is your 100 years. तो Gopi is telling that I cannot think even of the 100 years back. मतलब 100 साल पुरानी बात भी हमें नहीं सोच सकती, तो 1,000 1,000 years तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात हो गई. Gauri, I can think of 100 years because my father's grandfather is 100 years old. So Gauri is one of the girls in the bus is telling that I can think of the 100 years because my father's grandfather, मतलब मेरे पापा के जो दादाजी सॉरी ग्रैंडमदर हैं, दादी हैं, वो अभी 100 years old हैं, इसलिए मुझे 100 years I can think of it. Manjeet, that means those caves are almost 100 great grandmothers old. 100 great grandmothers old. तो मंजीत ने क्या कहा कि ये जो केव्स हैं मतलब 10,000 years old हैं, तो वो 100 grandmothers 100 year old 100 grandmothers के बराबर हैं, क्योंकि क्या होगा 100 multiplied by 100 is equal to 10,000. तो जो है ये 10,000 हम कैसे लिखते हैं 10,000, दिस इज 1,000 and this is 100. Now you can make out the difference between 10,000, 1,000 and 100. So 100 great grandmothers old, मतलब 100 जो है great grandmothers के 100 years वाली हो उनके बराबर है. तो this is that much old is the cave, this cave is. Everybody bursts into laughter, ha ha ha. Now the children are really excited to see the cave paintings. It is about 11 o'clock when they reach Bhimbetka. You will underline 11 o'clock when they reached Bhimbetka. You have to underline these things in your textbook. तो ये जो है अब यहाँ पर जो पिक्चर दिया हुआ है, दिस इज द पिक ऑफ द केव पेंटिंग्स. वाव, इवन 10,000 years ago people made such lovely paintings, that too on the rocks. This pic as such it is not clear, but this is the cave paintings which are 10,000 years old. These rocks are thousands of years old. और ये जो rocks जिसमें से केव पेंटिंग्स भी रहे हैं वो तो बहुत सालों, thousands and thousands of year old हैं. Now we move on to the next one is your page number 29. Shankar, this painting also
has very big bisons. Hey, I got an idea. It will count and I will count the bisons and you count the deer in the paintings. Now bison is a type of an animal like buffalo जो होता है एक bison होता है. तो इन जो paintings यहाँ पर दी हुई हैं इस paintings के अंदर कुछ bisons हैं और कुछ deers हैं. तो शंकर क्या बोलता है जो ये सारे names जो हैं students के these are all the children who are going on the picnic. So what he says that I will count the bisons and you count the deers in the painting. तो paintings में कौन कौन सी चीज़ है एक bisons है और दूसरा deer है. बीना I will count the people और तीसरी चीज़ कौन सी है पेंटिंग के अंदर है that is the people लोग हैं. Let us see which are the most bison, deer और people. तो तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन है bison है कि deer है कि people हैं. Now you can see here the picture is given. Here he is counting 34, 35, 36, 37. I got 37 bisons. तो जो शंकर ने कितने bisons काउंट किए 37 bisons. Underline this. I got 37 bisons. That means the number of bisons is 37. You can write here bisons is 37. और वैसे ही यहाँ पर 112, 113, 114 and I got 117 deers है. That means बीना ने क्या कैलकुलेट किया बीना ने deer कैलकुलेट किए. Deer is equal to 117. बीना ने कितने deers कैलकुलेट किए 170. Number of deer 117. Bison is 37. Now the question is how many more deer are there than bisons. मतलब deer जो है bison से कितने ज़्यादा हैं तो हम क्या करेंगे deer में से bisons को माइनस करेंगे. 117 minus 37 that is equal to 80. That means 80 bisons 80 deers are more than the bisons. Bisons से जो है 80 deers ज़्यादा हैं. But Beena is the happiest because the number of people is even more than the number of deer and bisons together. Her count is less than 200. लेकिन बीना खुश है क्योंकि जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो डियर और बाइसन दोनों को मिलाकर उन दोनों का टोटल करने के बाद भी नंबर ऑफ पीपल इज़ मोर और उनका काउंट कितना है इट इज़ लेस देन 2. हर काउंट इज़ लेस देन 200. इट इज़ मोर बट जो है वो 200 से लेस है. तो because the number of people is even more than the number of deer and bisons together. तो number of underline करिए is even more than the number of people and bisons together. Her count is less than 200. उसने counting किया लेकिन उसका जो number of people what she counted is less than 200. So total number of deer and bisons are कितना है 117 plus 34 that is equal to 154. Total number of deer and bisons is 154 and so number of people जो हैं वो कितने हैं so people are more than 154 but less than 200. So here exact number of people is not there. So we can say that what is the number of people क्योंकि ये दिया हुआ है कि इन दोनों के टोटल से ज़्यादा है लेकिन 200 से कम है. So it is between 154 and 200. So the people are more than 154 but less than 200. So how many people must Beena have counted. यहाँ पर एक approximate number चाहिए 214, 154, 134 and 177. Now 214 है तो 214 will be bigger than 200 तो ये नहीं होगा. 154 that is equal to the number of bisons and deer so that is also not possible because it is more than that. 154 is less than this number so that is not possible. So the correct answer we have to take approximately is 177. So the number of people Beena must have counted must be nearly 177. This guide tells that there are more than 600 cave paintings in all. तो जो गाइड होता है हमेशा कोई भी टूरिस्ट प्लेस में आप जाएंगे तो वहाँ पर गाइड होता है आपको बताता है कि क्या क्या चीज़ें देखनी हैं और इसका इंपॉर्टेंस और उसकी हिस्ट्री क्या क्या है. टेल्स ऑल द थिंग्स अबाउट दैट प्लेस. सो द गाइड टेल्स दैट देयर आर मोर देन 600 केव पेंटिंग्स इन ऑल. नाउ इट्स टाइम टू लीव भीमबेटका. दे हैव स्पेंड 1 hour देयर. अब उन्होंने 1 घंटा जो है वहाँ पर भीमबेटका में बिताया. what time is it now? ऑलरेडी दे रीच देयर एट 11 o'clock. हमने ऑलरेडी अंडरलाइन किया कि भीमबेटका पे कब पहुँचे थे वो लोग. इट वॉज 11 o'clock. 11 o'clock दे रीच देयर एंड 1 o'clock दे स्पेंड देयर. 1 घंटा उन्होंने वहाँ बिताया. तो अब टाइम क्या होगा 11 + 1 दैट इज़ 12 o'clock. सो भीमबेटका पे अब 12 बजे वहाँ पर हैं उन्होंने सब देख लिया.
दे आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स भोपाल। अब वो जो है भोपाल की तरफ मूव करेंगे। दे शुड रीच देयर इन लेस देन एन आवर एट अबाउट। और अब जो है भोपाल पहुंचने के लिए अब उनको 1 घंटे से थोड़ा सा कम समय लगेगा। तो वो लोग लगभग कितने बजे तक भोपाल पहुंचेंगे? आफ्टर 12 कम्स 1 o'clock, तो दे विल रीच देयर ऑलमोस्ट एट 1 o'clock. This is your page number 29 that we have completed, dear children.